Guys, how many of you used to love collecting stickers during your childhood days? During my childhood days, I would just love to collect the stickers, and these are perhaps one of my cutest memories of my childhood. Hey guys, this is Soumya and welcome back to my channel. So in today's video, I thought of recreating one of those childhood memories. You got me right. I'm going to make my own stickers today. So what are we waiting for? Let's quickly begin the video. So to begin with, सबसे पहले आज मैं आउटलाइन ड्राइंग बना लूँगी उन सारे डिज़ाइंस का जिसका मुझे स्टिकर्स बनाना है. सो वंस द आउटलाइन ड्राइंग इज़ डन, उसके बाद मैं कलरिंग शुरू करूँगी. तो आज मैं सबसे पहले एक BTS कार्टून ड्रॉ करूँगी और उसके बाद आज मेरा मन है कि कुछ खाने पीने का आइटम बनाया जाए. यू नो लाइक आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज़, इस तरह की चीज़ें स्टिकर्स में बहुत अच्छा लगता है. So yes, after completing the BTS cartoon, I'll move on to my next drawing. और मेरा next drawing है एक ice cream cone with a cherry on top of it. And it's looking really yummy. So ice cream cone के ख़त्म होने के बाद I'll keep on drawing one after the other food items, जिसमें पहले मैं एक पेस्ट्री बनाऊंगी, उसके बाद मैं एक जूस का बॉटल बनाऊंगी और उसके बाद एक हॉट डॉग और एक बर्गर. और यहाँ पे मैंने एक लिपस्टिक भी बनाई है बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि कुछ फंकी टाइप बना लूँ. तो मैंने एक लिपस्टिक, एक नहीं एक्चुअली आई मेड अ पेयर ऑफ लिपस्टिक्स. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, या मैं कलरिंग स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले मैं BTS कार्टून कैरेक्टर को कलर करना शुरू करूँगी एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ब्राइट कलर्स. हियर आई एम यूजिंग ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्राइट पिंक एट्सेट्रा. And I'll stick to what I say as always that बिना हाईलाइटिंग के और बिना लाइट एंड शैडो के किसी भी पेंटिंग में जान नहीं आता. सो यहाँ पे मैंने मेरे कैरेक्टर्स में पहले तो लाइट एंड शैडो क्रिएट किया है और उसके बाद मैं ब्लैक कलर यूज़ करते हुए आउटलाइन करूँगी और एक हाईलाइट क्रिएट करूँगी. गाइस, मेरे इस छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू कैरेक्टर्स के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो डेफिनेटली बनता है. सो अगर आप लोगों को मेरा अब तक का प्रोसेस अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड न्यू विजिटर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट गो अवे विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल. So here I'm almost done with my first element and so now moving on to my second element. अब मैं मेरा आइसक्रीम कोन को कलर करूँगी और उसके लिए मैं मेनली पिंक और वाइट कलर यूज़ करूँगी आइसक्रीम को कलर करने के लिए, और कोन को कलर करने के लिए येलो और ब्राउन यूज़ करूँगी. एंड द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द आइसक्रीम इज़ गोइंग टू बी रेड इन कलर. एंड एज़ यूजुअल मैं इसमें भी लाइट एंड शैडो क्रिएट करूँगी और उसके बाद ब्लैक से बॉर्डर करके हाईलाइट करूँगी. एंड इस तरह से मैं अपना आइसक्रीम कंप्लीट करूँगी एंड विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट एलिमेंट. मेरा थर्ड और नेक्स्ट एलिमेंट है पेस्ट्री, विच इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट. और इस पेस्ट्री को बनाने के लिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी. ऑफकोर्स टॉप में मैं वाइट क्रीम शो करूँगी और उसके बाद अलग अलग से कलर्स से इसको कलर करके बहुत ही कलरफुल एक पेस्ट्री क्रिएट करूँगी. एंड देन ऑफकोर्स एक एक करके मैं सारे आइटम्स को कंप्लीट करूँगी. द जूस, द ग्लास ऑफ जूस, then the hot dog, the burger, and of course, last but not the least, the lipsticks. Well, lipsticks को color करने के लिए I'm going to use green and pink. These are going to be the two colors combining which I'm going to complete this particular item, or rather the last item of today's project.
once all the elements are done, now it's time to move on with the next step. And the next step will be to cut out all these particular items carefully, and then I'm going to stick cello tape on both sides of each element. So here it is. अब लग रहा है ना बिल्कुल रियल स्टिकर जैसा. इनफैक्ट मेरे को तो ये रियल स्टिकर से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है. आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा. So once everything is done, we can use a 2M tape to stick it on any scrapbook or any on the cover of any art book, any drawing book, anywhere. Okay guys, so these are the final pieces. So you can try to make different type of patterns and designs with the stickers. So these are what I decided to make today. So if you like the video, please do not forget to like, share and comment down below. See you again in my next video. Till then, goodbye.